Hello everybody, hope you all to be healthy and hearty. Welcome to this awesome session of current affairs with me Yagyasani Patra. First अपन को last quiz रा answers हमें discuss करेगा, then we will be discussing the most important current affairs of today. But before that, let us start with a motivational powerful quote. So friends, in your life, it is in the end, it is not the years in your life that counts. It is the life in those years that counts. So live your life to the fullest. Fulfill all your hobbies, spend time with those people you like to spend, those people who invest in you, and live fully. Now let us discuss the answers of the quiz of the last video. First question में पहुँचा थी that बैतरणी river जोटा कि गोनासिका इन केउंझर एठू ओरिजिनेट करे था. What is the length of बैतरणी river? The answer is 365 kilometers. Baitarani river originates at Gonasika in Keonjhar, then all the way across Keonjhar, फिर Kendrapada district, then it flows into the Dhamra and ए जगह रही गहिर माथा, which is the largest nesting site for the olive ridley turtles is there, and Bhitarkanika National Park is also situated here. Second question was International Day of Forest केबे observe होता है? Friends, International Day of Forest 21st March को observe होता है. The theme of 2022 International Forest Day was Forest and Sustainable Production and Consumption. Third question, which is the largest mangrove of India? So the largest mangrove of India is Sundarbans, and mangrove रा unique feature जोटा हमें जानिबा कथा, it is filled with pneumatophore. Pneumatophore माने breathing roots, because mangrove रे पानी आउ दलदल रे जो गछ थांती तार roots पानी भितर थाए, so they have breathing roots जाको pneumatophore कहते. These plants are salt tolerant, hence they are called as halophytes. Here viviparous mode of production भी थाए, माने कि जो fruits थाए, fruits भितरे ही seeds germinate करे जाए, because when the seeds fall into ground तो germination हबारो air and other suitable conditions is not there, so the seed germinates within the fruit itself. Question number 4, India भितरे केतेटा tribal population, केतेटा tribal community पाया जाती? So the answer is 645. Friends, the tribal population is scattered across the India. They represent 8.6% of Indian population. Central India has 85% of tribal population. The northeast has lagbhag 11% of the tribal population, and the rest 3% of tribal population is scattered across India. Ministry of Tribal Affairs got a separate ministry set up in the year 1999 to look for the development, the welfare of the tribal people. Please remember, किछिटा tribal population अचंती जो माने कि या तो number रे बहुत कम थे या modern civilization रो काफ़ी दूर रहते थे, far from the modernization, and hence they are very vulnerable. Some tribes are also there जो माने कि double digit रे ही बाकी अचंती बस. These kind of tribes are called as the PVTG, यानी कि particularly vulnerable tribal groups. Odisha has the largest number of PVTG in India, 13 out of 75. Question number 5 थिला. देखो फार्म लोन्स आमे जाने छो जेमती आपनकर किसान क्रेडिट कार्ड, then फसल बीमा योजना, so insurance and loans, these are many things जोटा कि आज हमको देखने को मिलता है. My question was, in the history of India, which ruler was the first to extend farm loans? The correct answer is Muhammad bin Tughlaq. See friends, when Muhammad bin Tughlaq was in power, एमती Muhammad bin Tughlaq को wise fool कहा जाए, माने he was a person of the future, but at present what should be the strategy that he did not know. So Doab belt, Ganga Yamuna belt भितरे he introduced the taxes at a time जेबे famine already से present थिला. सो न्याचुरल कथा होची कि पीजेंट्स एठी रिवोल्ट करिवे, जेबे पीजेंट्स माने मोहम्मद बिन तुगलक गवर्नमेंट अगेंस्ट रे रिवोल्ट करिथिले. ही इंट्रोड्यूस्ड द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स टू अपीज द पीजेंट्स. ए एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स रो ना थिला दिवानी को, एंड एठी फार्म लोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया रे दिया जाइतिला. ए फार्म लोन्स को टक्कावी कहंती, टक्कावी. नेक्स्ट क्वेश्चन थिला, in India, what percentage of the children are stunted? So some of the statistics say that more than one third of the children in India are stunted. किछि अलगा reports रे अपन को even 38.4% of Indian children are stunted बोली का भी अपन को मिलेगा. Next, and please remember that India and Pakistan, they contribute to लगभग 40 to 45% of the stunted children all over the world.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क रो फोर्टिफिकेशन माने मिल्क भितर जो नरिशमेंट रहा कथा न्यूट्रिएंट रहा कथा से रोहनी सेकेंड कथा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर या को यूज करके भी मिल्क सर्कुलेट करा जाउछे तो गवर्नमेंट केम अप विद द मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट हाँ तो मिल्क रो फोर्टिफिकेशन माने से न्यूट्रिएंट आर्टिफिशियली दिया जाए एंड देन इट विल बी गिवन इन द स्कूल्स इन द अदर आंगनवाड़ीज ताकि प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन विल गेट द बेनिफिट तो मिल्क फोर्टिफिकेशन केवं विटामिन द्वारा करा जाए था द आंसर इज विटामिन ए विटामिन डी दीज आर यूज्ड इन मिल्क फोर्टिफिकेशन एंड मिल्क फोर्टिफिकेशन करने जो संस्था को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए दैट इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड प्लीज रिमेंबर इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड 1st of June इज द वर्ल्ड मिल्क डे नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो ग्रामी अवार्ड्स एवं रिसेंटली अनाउंस है विच people from Indian origin have won the Grammy Awards. So Falguni Shah and Ricky Cage is the answer. Next question mu pachare thile that which Indian woman has topped the Hurun richest self-made millionaire index? The correct answer is Falguni Nayar, Naika. Then next question is faster. Faster माने fast and secure transmission of electronic record. This has been started by whom? तो देखो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम अच्छे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सो सुप्रीम कोर्ट हैज स्टार्टेड द फास्टर सिस्टम तो जमती हमको किसी नोटिस दबार था फॉर मे बी डिस्चार्ज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द जेल टू कीप अ पर्सन इन द जेल टू एक्सटेंड सम ऑफ द थिंग ऑफ वॉट एवर द डे टू डे बिजनेस तारा जो हमको ऑर्डर दबार था से जब हार्ड कॉपी रहे तो ये काफ़ी टाइम लगी जाए नाउ इट कैन बी डन डिजिटली बाय अ मेथड विच इज़ फास्टर फास्टर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूक्रेन फ्रेंड्स यूक्रेन रो करेंसी होची हर्विनिया एंड 1 यूक्रेन करेंसी 1 हर्विनिया इज इक्विवेलेंट टू 2.5 rupees. These were the answers of the previous quiz. Congratulations to everybody who have done it correct. चलो आज किछिटा क्वेश्चन आम डिस्कस करवा. So friends, you know that लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भितर आम जो सीट थाए फॉर एग्जांपल इन लोकसभा द करेंट मेंबरशिप इज 543. सो आमर इंडिया रो एरिया को किछिटा कंस्टिट्युएंसीज रे डिवाइड करा जाए. व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट इज डिलिमिटेशन. सो डिलिमिटेशन कमीशन इज सेट अप बाय विच आर्टिकल in the Indian Constitution, both for the Lok Sabha as well as the State Legislative Assembly. Delimitation Commission बेसरे किचड़ा जिनसो मैं अपन को कह दूँ. Friends, Delimitation Commission is a very very powerful commission. The task of Delimitation Commission is to set up the constituencies, to demarcate the boundaries. As per the 1971 census, लोक सभा रो मैक्सिमम मेंबरशिप को 552 रखा जाए एंड राज्यसभा रो मैक्सिमम मेंबरशिप को 250 रखा जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट एससी कंस्टिट्युएंसी कोटी बनिबो, एसटी कंस्टिट्युएंसी कोटी बनिबो, ए सब जगह काम डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा करा जाए था. प्लीज रिमेंबर डिलिमिटेशन कमीशन इज सो पावरफुल दैट the order or the decision of the delimitation commission cannot even be challenged in the court of law. माने या ऊपर judicial review apply हुए नहीं. This is the only case जोटे judicial review apply हुए नहीं. Delimitation commission भितरे members के थांते. So the chairperson, the chief election commissioners and the election commissioners from all the states भी यारो member थांते. Next question is, can you tell me friends, when is World Ocean Day observed? थर्ड क्वेश्चन देखो हेमोफीलिया इज अ रेयर डिजीज. 10,000 लोगों भितरे 1 person will be spotted with hemophilia. Do you think hemophilia is a inherited disease, genetic disorder ऐसे था क्या? Try to tell me in the comments. So please remember, let me tell you something more about hemophilia. देखो hemophilia is a very very rare disease. Hemophilia दीटा टाइप रहता है, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी. हेमोफीलिया माने हो चाहिए इट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ अ क्लॉटिंग फैक्टर. तो जब हमारा ब्लीडिंग होता है जो क्लॉटिंग फैक्टर बॉडी रे ठीक थे इट विल गेट क्लॉटेड. बट जदि क्लॉटिंग फैक्टर एक्स क्रोमोजोम भितर ठीक से नथिबो यानी कि डेफिशिएंसी थिबो सो द ब्लड वोंट क्लॉट. दिस अ वेरी वेरी रेयर डिजीज. आई थिंक इट इज ऑल्सो सीन इन क्वीन एलिजाबेथ. So hemophilia A and hemophilia B, there are two kinds of hemophilia. Hemophilia A is more common as compared to hemophilia B. In hemophilia A, factor 8 missing था. In hemophilia B, factor 9 missing था. यार ट्रीटमेंट रो तरीका हो चाहिए रिप्लेसमेंट थेरापी. तो जो भी फैक्टर मिसिंग अच्छी ताको वाया इंजेक्शन वेन्स रे दिया जाए, फैक्टर 8 और फैक्टर 9.
And another surprising fact is that, friends, hemophilia is more common in males as compared to female. Why? The deficiency is associated with the X chromosome, and females with the X chromosomes already thai. But in males, there is one X chromosome and one Y chromosomes. So because of this, hemophilia is more prevalent in the males. Next question, Tila. So my next question is, friends, cabinet. 1975 India faced the internal emergency. Se time re amaro Prime Minister thile Madam Indira Gandhi, and cabinet was introduced for the first time here. Can you tell me which article of the Constitution mentions about the cabinet? Next question is, देखो emergency जब भी लगी था सेतिरे all the fundamental rights will be suspended. जदि external emergency लगिबो automatically article 19 यानी कि right to freedom suspend हबो. आ जदि अलगा कोनसी emergency लगी था ताले fundamental rights को suspend करिबा पई article 32 को suspend करा जाए से भी अलगा तरीका से suspend करा जाए. However, दीटा fundamental right अछि which will never be suspended. Can you tell me which two fundamental rights are never suspended in the case of emergency? Next question was geography ro. Friends, Strait of Hormuz, you must have heard. Strait of Hormuz separates which two countries? Next question. Can you tell me, हमें oceans देखो, sea देखो, continent देखो, but there is a sea within an ocean. So this is a sea without any coastline. It is a sea within an ocean. Can you tell me which is the sea? Next question is, friends, Nile River. You know this is the longest river on earth. Nile River originate केउंटू हेत है. Can you tell me? And what is the length of Nile? The next question is, so we know Iran तोड़े Persian Gulf. Can you tell me which rivers will drain into the Persian Gulf? Try to answer. Last question of the day is regarding economy. तो फ्रेंड्स हमें जान चुकी डिफरेंट कंपनीज दे गेट सेटअप सेठी काफ़ी NBFCs था एंड यू नो ऑफ लेट लास्ट 1 डिकेड रे हमें जो देखी छो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी हैज बिकम अ बिग इशू. सो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को सॉल्व करिबार पूर्ण तरीका थिला सरफेसी विच वाज ड्रैकोनियन एंड हेंस राइट नाउ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 इज ऑपरेशनल. हावेवर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 रो जदि आमे कोनोसी भी केस रो निपटारा करूछु या व्हेन द लेंडर्स आर कंप्लेनिंग टू द NCLT तो से पूरा प्रोसेस रे 330 डेज लगी जाए. सो सेति पई एथर जो बजेट अछि एंड इवन द लास्ट ईयर आल्सो वी सॉ दैट प्री पैक वाज अ न्यू सिस्टम व्हिच वाज इन डिस्कशन. तो एतरे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी रो हमको जिबार नै, बट दिस इज अनदर सिस्टम by which the lenders can recover back the amount of the money that is lent. So can you tell me pre-pack pai tahale kete din lagi thai? What amount of time is required in the pre-pack? These were all the questions of today. If you like the session, share it with your friends. I will see you in the next class. God bless you all. Thank you so much. Bye bye.